Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, 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 श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, बंधु मुई सावधान माते, बंधु मुई सावधान माते, बंधु मुई सावधान माते, बंधु मुई सावधान माते, जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय, जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जाय, कृष्ण प्राप्ति हो जा होइते,
કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જા હોય તે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જા હોય તે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જા હોય તે ગુરુમુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્તે તે કોરિયા ક્યા ગુરુમુખ પદ્મ ભાગ્ય ચિતે તે કરી ક્યા আর না করি হো মানে আশা আর না করি প্রিয় মনে আশা আর না করি হো মানে আশা আর না করি মানে আশা শ্রী গুরু চরণে রতি এই সে উত্তম গতি চরণে রতি এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা हे प्रसाद दे पूरे सर्व सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से 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 दिव्य ज्ञान निधे प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान निधे प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा होते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जाहर चरित वेद गाय जार चरित वेद गाय जाहर चरित वेद गाय जार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया एपे जय घुषु त्रिभुवन एबे जाज घुषुक त्रिभुवन एपे जय घुषु त्रिभुवन एबे जाज घुषुक त्रिभुवन शिल प्रभुपाद पतित पवन प्रभुपाद पतित पावन আমি তোয়া পদে লইল শরণ আমি তোমা পদে লইল শরণ জয় প্রভু পদ জয় প্রভু পদ প্রভু পদ জয় প্রভু পদ जय प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद जय प्रभु पद जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana Jaya Jagannath Jaya Baladeva Subhadramai Jaya Sudarshana Jaya Gaura Gopinath Gopinath Radhe Gaura Gopinath Gopinath Radhe Jaya Gaura Gopinath Gopinath Radhe Jaya Gaura Gopinath Gopinath Radhe Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Gurudev Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Srila Prabhupada ki jai. Jai जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बेबीटी फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका राधा श्याम गौर की जय। श्री
श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय, श्री क्षेत्रपुरी जगन्नाथ धाम की जय, श्री मायापुर नवदीप धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, संजय दास भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि बोल, हरि बोल। और गुरु स्तुति असमति कोटि हरे कृष्ण, गुरु स्तुति असमति कोटि हरे कृष्ण, गुरु स्तुति असमति हरे कृष्ण। और श्री गुरु श्री गौर हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभु। এটা রহিব প্রজেক্টরটা ড্রামা বেলে কাইকি ସେଠି ଦୁଇଟା ହିଁ ପ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ସେଠି ଦୁଇଟା ପ୍ଲଗ୍ ଅଛି, ଗୋଟେରେ ୱାୟରଲେସ୍ ଲଗେଇ ଦେବି ଭାବୁଛି, ୱାୟରଲେସ୍ କନେକ୍ଟ କରୁଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରଟା ଅନ୍ କଲା ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସରିଲା हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समस्त को संडे प्रोग्राम को स्वागत। संडे प्रोग्राम स्टार्ट करिया पूर्व हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। समस्त संडे प्रोग्राम को स्वागत। सब बेले भाया आज भी संडे प्रोग्राम में आम फर्स्ट प्रेजेंटेशन करूँ, तापर ड्रामा, तापर आज आम बहुत सौभाग्य अच्छी कि आम गोटे अग्रगण्य भक्तर ठू श्रवण करूँ। तो विदाउट एनी डिले आम प्रोग्राम स्टार्ट करिया बाय चैंटिंग वन टाइम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रेजेंटेशन पाई आम देवी प्रसाद भक्त देवी प्रसाद स्वागत करिया। सारे हरे कृष्णा मामले जप करी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। तो आज आम श्रीला जगदीश पंडित का अपीयरेंस डे विषय जानिया। तो श्रीला जगदीश पंडित श्री चैतन्य महाप्रभुंकर जने पार्षद मान जानी। सो
श्रीला जगदीश पंडित का जन्म हुआ था पौष्य माह के शुक्ल पक्ष तृतीया में, और उनका जन्म गुवाहाटी में हुआ था। तो उनका जो श्रीपट था वो चाकदाह रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर नदिया जिले के यसदा गांव में था। उनके पिता का नाम था कमलक्ष और दादाजी का नाम था भट्ट नारायण। और उनके पिता माता के निधन के बाद वे गुवाहाटी छोड़ के वो मायापुर आके बस गए थे उनकी पत्नी दुखिनी और भाई हिरण्य के साथ। तो जब वो मायापुर आए तो श्रीला जगन्नाथ मिश्र जी, जो कि हमारे गौरांग महाप्रभु के पिताश्री हैं, उनके घर के पास ही उन्होंने एक घर लिया और वहीं बस गए। और ऐसा जब समय चलता गया तब श्रीला जगन्नाथ मिश्र जी के साथ श्रीला जगदीश पंडित जी का बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो जो उनके बेटे थे, श्रीला जगन्नाथ मिश्र जी के जो बेटे थे वो थे हमारे निमाई प्यारे प्यारे गौरांग महाप्रभु जी। तो उन जगदीश पंडित जी की जो पत्नी थी वो निमाई को अपने बेटे के जैसे ही देखभाल किया करती थी। कभी कभी जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो बहुत जोर से रोने लगते थे और श्रीला जगदीश पंडित की जो पत्नी दुखिनी वो उनको गोद में लेके लोरी गा के सुला दिया भी करती थी। तो ऐसे ऐसे टाइम चलता गया। फिर गौरांग महाप्रभु बड़े हुए, फिर हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ का प्रचार किया उन्होंने। फिर उन्होंने जगदीश पंडित जी को बोला था कि आप जाके नीलांचल यानी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान के शुभ नाम का प्रचार कीजिए। और जगदीश पंडित जी ने ही वही किया। वो आके नीलांचल में रुके और नीलांचल में भगवान के नाम का प्रचार किया और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। और उसके बाद जब ऐसे टाइम बीता गया तो भगवान जगन्नाथ जो हैं पुरी में, उनके साथ उनका जो संबंध और बढ़ता गया और लगाव भी बढ़ता गया और उनकी भक्ति में वो पूरा लीन हो गए। मतलब ऐसा था कि वो जगन्नाथ जी को एक दिन ना देखे नहीं रह सकते थे। जगन्नाथ जी उनको पूरा अट्रैक्टेड थे जगन्नाथ जी के प्रति। तो जब उनका संकीर्तन यज्ञ पुरी में ख़त्म होने को आया और वो लौटने को आए मायापुर वापस, तो वो वापस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जो जगन्नाथ जी थे वो उनसे इतने लगाव थे कि वो पूरी छोड़ के आ नहीं पाते थे। लेकिन उनको तो मायापुर आना है, उनको मायापुर आके चैतन्य महाप्रभु से फिर मिलना है, पर वो पूरी छोड़ के भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनको जगन्नाथ जी की से इतना लगाव हो गया था, वो अलग होना नहीं चाहते थे। तो ऐसे चिंता में पड़ गए। तो उस टाइम जो पुरी के गजपति महाराज थे उनको जगन्नाथ स्वप्नादेश करते थे। हर टाइम जो होता था तो उनको ही स्वप्नादेश करते थे। तो स्वप्नादेश में जगन्नाथ जी ने गजपति महाराज को बोला था कि आपके पुरी में यहाँ पर मेरा एक बहुत बड़ा भक्त जिसका नाम है श्रीला जगदीश पंडित, वो आके भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है और आप जो वो अलग होके नहीं जा पाएगा तो वहाँ पर वो पूरी छोड़ के नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो मुझसे बहुत अट्रैक्टेड हो गया है, वो बहुत लगाव है मेरे से उसको, तो वो बहुत दुखी है। तो अभी जो नवकलेवर होने वाला है, नवकलेवर मतलब जो मूर्ति चेंज होती है भगवान की 19 साल में एक बार, तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा ना, मेरी नई मूर्तियों को मंदिर में आप पूजा करवाइएगा और जो पुरानी मूर्तियाँ हैं मेरी उसको श्रीला जगदीश पंडित जी को दे दीजिएगा, वो उनके साथ लेके जाएंगे। तो ये बात जब श्रीला जगदीश पंडित जी को पता चली तो जगदीश पंडित जी इतना खुश हो गए कि वो कूद के झूमने लगे, हरी हरे हरी हरी चिल्लाने लगे। उसके बाद श्रीला जगदीश पंडित जी ऐसा ही किए। जगन्नाथ जी की जब नवकलेवर हुआ, उनकी जो पुरानी जगन्नाथ जी की ही मूर्ति, बलभद्र सुभद्रा जी की नहीं, सिर्फ जगन्नाथ जी की मूर्ति वो लेके आए। और पर एक प्रॉब्लम वहाँ पर था कि वो जो मूर्तियाँ आई थी, जगन्नाथ जी की जो मूर्ति थी वो बहुत भारी थी। मतलब उसको एक आदमी पुरी से मायापुर तक नहीं ले जा सकता आसानी से। तो जगन्नाथ जी ने जगदीश पंडित जी को बोला सपने में कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एक ब्राह्मण को बोलिए जो मेरी मूर्ति को अपने पीठ पर लाद के ले गए, तो और एक शर्त है कि मेरी मूर्ति को वो नीचे नहीं रखेगा, वो कुछ भी हो जाए पुरी से मायापुर तक के सफ़र को वो मेरी मूर्ति को कभी नीचे रखेगा, मतलब ज़मीन में स्पर्श नहीं करवानिएगा। तो ऐसा होने से क्या होगा ना, मेरी मूर्ति जो है इतनी भारी है वो हल्की हो जाएगी और आप उसको ले पाएंगे। तो जगदीश पंडित जी ने वही किया। जगदीश पंडित जी ने एक ब्राह्मण को बोले और वो ब्राह्मण उसकी पीठ पर जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है उसको लेके चलते चले और उड़ीसा क्रॉस करके फिर पश्चिम बंगाल में जब वो मायापुर के पास हो गए थे तो क्या होना, अचानक से क्या होना,
जब मायापुर के पास हो गए थे तो वहाँ पर भगवान ने अपनी माया दिखाई। अचानक से जो जसोरा गांव है पश्चिम बंगाल का, जो जसोरा गांव है वहाँ पर उसी के आसपास ही जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है वो बहुत भारी हो गई। इतनी भारी हो गई जो ब्राह्मण था जो मूर्ति को उठा के ले रहा था, तो वो मूर्ति को और उठा नहीं सकता, वो विवश होकर मूर्ति को नीचे रख दिया। और जैसे पूर्व निर्धारित शर्त थी कि मेरी मूर्ति जहाँ पर भी जमीन को स्पर्श करेगी वहीं पर मेरा मंदिर बनाना, वहीं पर मेरी पूजा अर्चना करना, श्रीला जगदीश पंडित जी ने वैसा ही किया। और आज भी आप जाके जसरा गांव में देख सकते हैं भव्य जगन्नाथ जी का मंदिर वहाँ पर अभी भी है। हरि बोल। तो ये थी एक लीला, वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित, ये देखिए फोटो भी है। तो वहाँ पर श्री जगदीश पंडित वर्शिपेबल डाइटीज चकदा के पास जसोरा गांव है, वहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है। और ये थी एक लीला। अब और एक लीला मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ ना, एकादशी का दिन था और उस दिन जो दो ब्राह्मण थे हमारे, श्रीला जगदीश पंडित और श्रीला हिरण्य, उनके घर में एकादशी का फास्टिंग मतलब व्रत चल रहा था और वहाँ पर प्रसाद बना था, विष्णु भगवान के लिए प्रसाद बना था। और जब वो प्रसाद बना था तो उस प्रसाद के लिए जो निमाई थे उस दिन हमारे चैतन्य महाप्रभु, उस दिन क्या हुआ था पता नहीं, पर उनके घर में पूरा फूट फूट के रोने लगे, इतने जोर से रोने लगे कि जो भी आया उनको समझाया, कुछ भी किया, वो रुके नहीं, पूरे पागलों की तरह रोने लगे। उनके माता पिता आए, पूछे कि आप क्यों रो रहे हो निमाई, आपको क्या चाहिए, आप बोलो, हम देंगे। गौरांग महाप्रभु फिर भी नहीं रुके। और उसके बाद में गौरांग महाप्रभु ने बोला कि आज एकादशी है और जगदीश पंडित जी के घर में विष्णु भगवान के लिए प्रसाद बना है, मुझे वो जो अन्न प्रसाद है वो मुझे खाना है, अगर वो आप मुझे नहीं दे पाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। पर्टिकुलरली उन्होंने ये बोला था कि आप अगर मुझे विष्णु भगवान का प्रसाद आज मुझे नहीं देंगे, छोटे से प्यारे से गौरांग महाप्रभु, तो मैं मर जाऊंगा। तो ये बात सुन के जो उनके जो माता पिता थे जगन्नाथ मिश्र जी और सच्ची माता, वो ये बात सुन के बहुत चिंतित हो गए और चिंतित होने के बाद उन सच्ची माता भी रोने लगी। पर बाद में जब उनके पड़ोसियों को, चैतन्य महाप्रभु के पड़ोसियों को, जब वहाँ पर जो वहाँ रहते थे उनके घर के पड़ोसियों को जब ये बात पता चला कि चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं एकादशी, तो वो मन ही मन हंसने लगे कि इतना छोटा सा बच्चे वो एकादशी के व्रत के बारे में कैसे जानते हैं, वो आश्चर्यचकित हो गए। पर जब हिरण्य जी और श्रीला जगदीश पंडित जी दो ब्राह्मण थे, उनको ये बात पता चला कि चैतन्य महाप्रभु को हमारे घर के बना एकादशी का प्रसाद चाहिए, तो वो खुशी से दौड़ के एक थाली में चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु के लिए विष्णु जी का एकादशी का बना हुआ प्रसाद समेट कर दौड़ के लाके श्रीला जगन्नाथ मिश्र जी के घर में लाके दिए। और श्री जगदीश पंडित जी ने चैतन्य महाप्रभु से ये बोला कि निमाई आप मत रो, हम आपके लिए एकादशी का प्रसाद ले आए हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप इसे ग्रहण कर सकते हो। तो वहाँ पर निमाई जी खुश होकर अपने दोस्तों के साथ वो प्रसाद जो था जगदीश पंडित जी लाए थे उसको खाने लगे। और वो जिस सुंदरता से खा रहे थे, वो सुंदर दृश्य को देखकर श्रीला जगदीश पंडित और उनके भाई हिरण्य खुशी से नाचने लगे, हरी 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 चिल्लाते चिल्लाते नाचने लगे, झूमने लगे। और उसके बाद जब ऐसा हुआ तब अचानक से एक समय का मुहूर्त आया जब श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु ने अपना प्यारा मदन बाल गोपाल स्वरूप श्रीला जगदीश पंडित जी को दिखाया था। और उस स्वरूप, उस बाल गोपाल स्वरूप के दर्शन करके श्रीला जगदीश पंडित धन्य हो गए और चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया और उनके शरण में चले गए। तो ये थी श्रीला जगदीश पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनके विषय में कुछ लीलाएं जो आपने सुनी। इसी के साथ हम हरे कृष्ण महामंत्र से इसको समाप्त करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला जगदीश पंडित की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्त देवी प्रसाद की जय। वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। अभी हम यही दिव्य लीला देखने के लिए एक सुंदर सा ड्रामा आयोजन किए हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम द ड्रामा पार्टिसिपेंट्स टू द स्टेज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अच्छा ड्रामाटा सस्पेंस ये जो पार्ट कहुई ता अलग हो देखिए क्वेश्चन आंसर हम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नरेटर ऑन करो। नरेटर हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जगदीश पंडित जगत के तारनहार थे। वह कृष्ण प्रेम के मनसूने बादल थे जो सभी पर दया की वर्षा कर रहे थे। जगदीश और उनकी पत्नी दुखिनी को नन्हे निमाय के प्रति वैसा ही माता पिता का स्नेह था जैसा स्वयं जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी को था। दुखिनी, मैं सोच रहा हूँ कि माताजी और पिताजी के आविर्भाव के देहांत के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें नर्मदा नदी के तट पर श्री जगन्नाथ मिश्रा के घर वास करना चाहिए। क्या कहती हो? जी स्वामी जी, अब निमाई तो हमारा सब कुछ है और हमें तो खुश होना चाहिए कि हम निमाई के पास जाके रह रहे हैं। निमाई हमारा पुत्र है और मैं उसकी दासी। हाँ, सही कहती हो। चलो नदिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। सामान बांध लो।
अरे सची, आज इस एकादशी के शुभ अवसर पे मेरा निमाई क्यों रो रहा है? हाँ, देखिए ना निमाई को, जब से रो ही जा रहा है, चुप होने का नाम भी नहीं ले रहा। अरे सची, क्या तुम्हें पता नहीं कि निमाई हरि नाम संकीर्तन से ही चुप हो जाता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे देखिए, अब तो कीर्तन ही हो गया, पर फिर भी निमाई चुप ही नहीं हो रहा। बेटा निमाई, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें क्या लाके दे जिससे तुम्हारा रोना बंद हो जाए? बोलो बेटा। अरे, ये निमाई को कैसे पता चला कि आज जगदीश पंडित जी के घर चावल का प्रसाद लगा है? चलो चलो सची, चलो हम चल के देखते हैं। चलो निमाई। जी स्वामी। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगदीश पंडित जी, जगदीश पंडित जी, क्या आप घर पे हैं? अरे आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे स्वामी जी, हरे कृष्णा। श्रीमान हरे कृष्णा, आइए अंदर आइए। और ये क्या, सची देवी और निमाई भी आए हैं? आओ आओ अंदर आओ। आओ निमाई। ये क्या, आज आपके घर में इतना सारा प्रसाद लगा है? अरे बेटा निमाई, क्यों रो रहे हो बेटा? क्या हुआ तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें? अरे इसीलिए तो निमाई रो रहा है, क्योंकि निमाई को आपके घर अन्य प्रसाद पाना है। हरि बोल, निमाई हमारे घर अन्य प्रसाद पाने आया है। पर मुझे चिंता है कि एकादशी के दिन अन्न प्रसाद पाना निमाई के लिए ठीक होगा? नहीं नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। अरे आप चिंता मत करिए जगन्नाथ मिश्रा जी, आप चिंता मत करिए। गोपाल और निमाई भिन्न नहीं है, और निमाई भूखा है और गोपाला भी भूखा है। जाओ दुखिनी, उनके लिए प्रसाद लेके आओ। क्या क्या निमाई आज हमारे घर प्रसाद पाएगा? अहो भाग्य, अहो भाग्य। निमाई, आओ बेटा निमाई, यहाँ बैठो।
तो निकल गया कॉर्ड। तुम्हारा जितना मन करे उतना प्रसाद पाओ। ये लो निमाई। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे खाओ खुद से, यम यम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने अपने लीलाओं से दिखाया कि वे जगदीश पंडित को कितना प्रिय मानते हैं। श्री जगदीश पंडित और दुखिनी माता की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो इस नाटक में निमाय बने हैं आदर्श और सची माता का रोल किया है पलक माता जी ने, और जगन्नाथ मिश्रा का रोल किया है राजश्री ने, और दुखिनी माता जी का रोल किया है शुभ्रांगी ने, और जगदीश पंडित मैं निशिका माता जी। कृष्णा कृष्णा की 2 ग्रुप की जय। इट्स अ वेरी नाइस ड्रामा डायरेक्टेड बाय आवर वन एंड ओनली प्रज्ञा माता जी। तो प्रज्ञा माता जी की जय। हरे कृष्णा। तो पूरा थियोरी प्रैक्टिकल दीटा को देखीदेले तो आउ चैतन्य महाप्रभु लीला रे प्रवेश रे आउ कौन फरक रहा सब तो होगला। बहुत बढ़िया है। तो जगदीश पंडित एत सुंदर महाप्रभु का पार्षद देखिले ना, केते सुंदर तांको लीला महाप्रभुंकर। आउ महाप्रभु केमती जगदीश पंडित घर जाइथिले, आउ जाइके भली अन्न प्रसाद पाइथिले आमे देखिले। तो एकादशी दिन थाउ थाउ महाप्रभु, कारण महाप्रभु किए स्वयं कृष्ण। हाँ, तो आउ थे समस्त ड्रामा पार्टिसिपेंट्स थे पलि आसतु। निमाई को माला पिंधा हम। प्रभु जी आ गए हैं हमारे। तो अभी हम लोग एक स्पेशल सेशन करेंगे जो कि हिज ग्रेस देवव्रत प्रभु देंगे। देवव्रत प्रभु लॉस एंजल्स से हैं
और ही इज़ ए डिसाइपल ऑफ हिज ग्रेस वैशसिका प्रभु। एंड वैशसिका प्रभु आप जैसे जानते हैं वो श्रील प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य हैं और प्रभुपाद जी के पुस्तकों को वितरण करने में उनका बहुत ही प्रयास रहता है। उन्होंने किताब लिखा है फैमिली बिजनेस, कि किताब डिस्ट्रीब्यूशन ही हमारा फैमिली बिजनेस है। और वैशसिका प्रभु के जितने भी कनेक्टेड भक्तवृंद हैं, आप जानते हैं एक चैट ए डे एक करते हैं, वो चैट एक चैप्टर पढ़ना रोज़, तो वो भी करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में माहिर है, कोई भी लैंग्वेज में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, ऐसे एक कार्ड्स बनाते हैं ऐसे, तो वो कार्ड्स में उड़ीसा में जाते हैं तो उड़ीसा का कार्ड दिखाते हैं, आपण गोटे बही नियंतु लाइक दिस। ये सब लिखिकी मैंने ट्रांसलेट करके से दौरान आ बहुत बढ़िया बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सबुआड़े। तो वैसे ही एक इंस्पायरिंग डिवोटी हैं हमारे देवव्रत प्रभु। देवव्रत प्रभु, यू अंडरस्टैंड हिंदी ऑल्सो? नॉट सो मच, ओके। आई इंट्रोड्यूस्ड यू इन हिंदी, दैट्स व्हाई दैट ओके ठीक है। So we are very happy and fortunate that Devavrat Prabhu has come, and he told that he'll give us his association. We are grateful for that. He is also a leading preacher and managing the Sankirtan bus party throughout USA, the Sankirtan bus party. And he has his degree in culture anthropology. His main source of inspiration is Srila Prabhupada and his books, and he is very expert in those also. So we are happy for his giving time to us. So Nimai, where you are? निमाई को एक माला पहनाएंगे देवाव्रत प्रभु। निमाई का छोटा सा माला एक है, उधर देखो पीछे है जैसे। माला निमाई, they actually acted on a drama now. Okay. How long will it go? We can have till 12. Till 12? Okay, that's fine. You need anything to project? No, Okay. I'll be okay. Thank you. Hare Krishna. Oh yeah, we can project one song. Yeah, you can project a song called Aimano Durdmati by Bhakti Vinod Thakur. Okay. Not right now, I feel pretty good. Himano durmati samsara bitore bodhiyachenu amin.
Oh, wait till it's projected. It's projected? It's going? Everyone can see it? It's being done. Okay. So we'll wait for it to go. We need a translation? Translator? Hindi? It's okay? Everyone speaks English? Okay. Okay. Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare He mano durmati samsara vitore podie accenu a me. He mano durmati samsara vittori podie accenu a me. Tavani jajan koman
janne tava nija jan gomana janne pate adile tumi Emono durmati samsara bitore poriye achenu ami Toya kori more patiya dekiya Doya kori more patiya dekiya Kohilo amere diya Ohedina jan sohobalo kata Ulasita veina Tomare tarite Shri Krishna Chaitanya Tomara tarite Shri Krishna Chaitanya Navadvipe avatara Navadvipe avatara Tomahe no kota dinahina janne Tomahe no kota dinahina janne Korilena baba pa Emono durmati samsara pitori poriye achenu ami Vedera pratijyan raki bharatare Vedera pratijya rati bharakare Rukma varna viprasuta Rukma varna viprasuta Mahaprabhu name Nariya Mataya Mahaprabhu name Nariya Mataya Sange Baya Vaduta Emono durmati samsara vitori poriye achenu ami Nanda Sutta ji ne Chaitanya Gosai
Nija nama koridan Tarilo jagata tumio jaya Loho nija paritran nija paritran Emono durmati samsara bhitori pariye achinu ami Emono durmati samsara bhitare padiya achinu ami Sekata suniya ashiya chenata Sekata suniya ashiya chenata Sekata suniya ashiya chenata Sekata suniya ashiya chenata Tomara charana thale Tomara charana tale Tomara charana thale Tomara charana tale Bhakati vinora kandiya kandiya Bhakati vinoda kandiya kandiya Bhakati vinora kandiya kandiya Bhakati vinoda kandiya kandiya Apana kaniye bole Apana kahini bole E mono durmati samsara vitori bariye achinu ami Mana durmati sansara bhitare padiya achinu ami E mono durmati samsara vitori pariye achinu ami Mana durmati sansara bhitare padiya achinu ami O Lord, with such a wicked mind as this, I have fallen into the material world, but you have sent one of your pure and elevated devotees to rescue me. He saw me so fallen and wretched, took pity, and came saying, O humbled soul, please listen to this good tiding, for it will gladden your heart. Sri Krishna Chaitanya has appeared in the land of Navadvip in order to deliver you. He has safely conducted many miserable souls such as you across the sea of worldly existence. To fulfill the promise of the Vedas, the son of a Brahmana, of golden complexion and bearing the name of Mahaprabhu, has descended along with his brother the Avadut. Together they have overwhelmed all of Nadia with divine ecstasy. Sri Chaitanya Gosai, who is Krishna himself, the son of Nanda, has saved the world by freely distributing the gift of his own holy name. Go to him also and receive your deliverance. Hearing these words, O Lord, Bhaktivinoda has come weeping and weeping to the soles of your lotus feet, telling the story of his life. Om Jnanatimidandasya Gyananjana Shalakoya Chakshurun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharini Nivishesha Shunyavadi Paschyachadesha Tarini Pancha Kolpatarum Bistya Kripa Sindhureva Cha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnave Bhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Durgame Patiminantasya Sakalat Parakater Mohur Swakripa Yasti Danena Santa Santva Avalambanam Nacho Gao Bhakti Sange Kara Sankirtan
Krishna Nama Upadeshe Tara Sarvajan. Nacho Gao Bhakta Sange Kara Sankirtan. Nacha? Krishna Nama Upadeshe Tara Sarvajan. Please forgive me. I just have to find this verse. Nachaga Bhakta Sangha. Okay. So this is coming from Chaitanya Charitamrita. Text number 91 of the Adi Leela 7. And what's being said here is Sri Chaitanya Mahaprabhu has just met his spiritual master, Srila Ishvara Puri. And Chaitanya Mahaprabhu, previous to meeting Srila Ishvara Puri, was a very proud scholar. And he was known for his scholarship, but simultaneously, he had a very proud disposition. And so because of this proud disposition, the devotees, they could see he was very talented, but they felt that that talent wasn't being used in the right way. So Chaitanya Mahaprabhu, displaying the pastime of going to perform the Shraddha ceremony for his father in Gaya, on the plea of going to Gaya to perform the Shraddha ceremony, he actually set the example of why anyone goes to a holy place. Yasyatma bhuti kunapetri dhatuke kaladriteshu saboma ijdi yatirtha bhuti salile nishkadishit janesu avigesu sa eva gokara. People don't go to holy places simply for the sake of taking bath, but they go to the holy places for the purpose of receiving the association of a Vaishnava. Bhavad Virad Bhagavatas Tirtha Bhuta Swayam Vibho. Tirtha Bhuta Tirthani Swatastena Kataprata. So, Chaitanya Mahaprabhu, he went to Gaya for the purpose of meeting his spiritual master, Ishvara Puri. And when he met Ishvara Puri, Ishvara Puri instructed him in the chanting of the holy names of Krishna. And what he told him was the primary process for achieving self-realization in the age of Kali is the chanting of Hare Krishna. So he gave him the holy names of Krishna and he told him to chant. When Chaitanya Mahaprabhu returned to Ishvara Puri after chanting these holy names, he said, Guru Maharaj, I think I've gone crazy. These holy names have completely made me mad. And so Ishvara Puri said, this is all fine, this is perfect, this is the ultimate result of chanting Hare Krishna. And then he recited a verse, Evam vata swapriya nama kirtya jatanarago jitatuta uchar hastiyato roti gayan mudmadavan nrindanti lokabayaha. That one who chants the holy names with a vow, the natural result is they experience various transcendental symptoms like shivering, tears falling from the eyes, rolling on the ground, dancing like a madman, and becoming completely indifferent to public opinion. And Ishvara Puri instructed Chaitanya Mahaprabhu that this is the ultimate goal of all spiritual practices. And this is the essence of the entire Srimad Bhagavatam, this one verse. So then he goes on to say this verse, which is very, very instructive for those who are participating in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. Nacho gao bhakta sange kara sankirtan, Krishna nama upadeshe tara sarvajan. My dear child, continue dancing, chanting, and performing Sankirtan in association with devotees. Furthermore, go out and preach the value of chanting Krishna Nam, for by this process you will be able to deliver all fallen souls. So the purport is very, very instructive. It is another ambition of the spiritual master to see his disciples not only chant, dance, and follow the regulative principles, but also preach the Sankirtan movement to others in order to deliver them. For the Krishna consciousness movement is based on the principle that one should become as perfect as possible in devotional service oneself, and also preach the cult for others' benefits. So this verse is instructing that
those who have received good fortune should be desirous to give that good fortune to other people. So why is it important to give good fortune to other people? Because the person who's speaking to all of you, myself, received that good fortune due to someone going out of their way to give me that good fortune. I first saw the Bhagavad Gita when I was 17 years old. I was at a friend's house and I found the Bhagavad Gita. I read a little bit of it, but I didn't understand it. Years later, in a quest to try to understand what the ultimate goal of life was, I had two questions. I wanted to know, what is the ultimate goal of life and what is the means to obtain it? And I came to the conclusion that all the holy scriptures of the world are mentioning some ultimate goal of life, but they're not giving the process to achieve that goal. So I wanted to know, how do I realize that truth within myself? So in the process of searching, somehow by good fortune, I met a book distributor, someone who came and gave me one of Srila Prabhupada's books. And when they came and gave me one of Srila Prabhupada's books, I received it and I read it. And reading it, I became inspired to give my entire life to serving the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So anyone who's participating in the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu has a grave responsibility to not only practice chanting and dancing in the association of devotees, but simultaneously they should make an effort to read Srila Prabhupada's books very scrutinizingly. Srila Prabhupada explains in this same chapter of the Chaitanya Charitamrita that one who regularly and scrutinizingly studies the Srimad Bhagavatam will develop attachment for chanting the names of Krishna. So when we make a thorough, systematic study of Srila Prabhupada's books, the natural desire that will arise in the heart is the desire to want to give Krishna consciousness to others. Because Srila Prabhupada's presence will be so pervasive through his voice coming through his books that he will personally take us by the ear and bring us out and have us distribute his books. And one of the wonderful things about distributing Srila Prabhupada's books is that you don't need anyone to tell you to do it. You don't need your spiritual master to instruct you to do it. You don't need your temple president to instruct you to do it. You don't need your Namahata leader to tell you to do it. You don't need your Bhakti Vriksha leader to tell you to do it. It is a service that if you feel that you're lacking service in your life, and all dissatisfaction in devotional service comes from having a lack of service. When there's a slacking of devotional service, there's a propensity towards fruitive activity, sense gratification increases, and simultaneously, due to lack of knowledge which has come through the study of Srila Prabhupada's books, there's a tendency towards speculation or trying to find knowledge outside of the realm of devotional service. But when one fortifies their life with the principle of Jivadoy Krishnanam Sarva Dharmasar, when they accept that the highest principle of all spiritual processes is to dedicate themselves to the distribution of transcendental literature, then they become connected to the flow of devotional service, and one begins to realize the essence of the Krishna consciousness movement, that Savai Pumsam Paro Dharmo Yator Bhaktir Hoksije Ahoitakiya Pratiyata Yayatmam Supersediti. That real satisfaction can only come that when we're connected to selfless service. And the most selfless service that we can take on is when we go through the discomfort of approaching people to give them an opportunity to hear about Krishna. We shouldn't think that Krishna consciousness is a place for socializing, that Krishna consciousness is a place to take a break from the busy work week, that, I spend my whole week working, and then on the weekends I have time for Krishna, but don't bring anything closer than that. Krishna consciousness is Kirtaniya Sadahari. It's an all-around process. It requires complete engagement. And the service which allows us to be completely engaged in the service of Krishna, whether one's a brahmachari, whether one's a grihasta, whether one's a vanaprastha or a sannyasi, is the distribution of Srila Prabhupada's transcendental books. Because it transcends the designation of our so-called
sections and subsections and designations of life. It gives us an opportunity to fully be engaged in the preaching of the Sankirtan movement. If one doesn't know how to speak, they can distribute books. If one doesn't know how to cook, they can distribute books. If one doesn't know how to do practically anything practical for the service of expanding the Sankirtan movement, book distribution is a service that anyone can do. My Guru Maharaj at his temple in Silicon Valley, they even have a dog distribute books. So if this dog is able to distribute books, why can't we? We should make it a fixated meditation, Vyasa Atmika Buddhir, to be constantly meditating. How can we give the world the opportunity to become Krishna conscious? And Srila Prabhupada said the greatest preaching is when we excel in the mass distribution of his transcendental literature in the world. Books are very powerful because they contain ideas. And ideas have the power to completely shift humanity. The entire American Revolution was founded on a book called Common Sense. And the entire development of the idea of communism came from a book. If anyone's ever heard of Darwinism or this theory of evolution, all this has come from a book. So if these books have had such a powerful impact on society, we can only imagine books which have been personally written by the pure devotee of Krishna for the purpose of creating a revolution within society. That is the purpose of the Srimad Bhagavatam. The purpose of the Srimad Bhagavatam is meant to completely turn society around. Tagvag visargo charata cha viplavo. So by the distribution of Srila Prabhupada's transcendental books, we distribute the idea of Krishna consciousness. Not only do we distribute the idea of Krishna consciousness, but we give a practical roadmap by which society can be reconstructed on the principles of Krishna consciousness. Srila Prabhupada's desire for the Krishna consciousness movement was simply not to integrate into the society and become a part of the society. Srila Prabhupada's vision for the Krishna consciousness movement was to create a revolution within society at large. So that revolution is a cultural revolution. And that cultural revolution is meant to create a wholesale overhaul of the modern society and completely go against the grain of the direction that modern society is going into, and give a completely Krishna conscious turnaround to that society. And all this can be done simply through focusing on the distribution of Srila Prabhupada's books. Because distributing books means that books go to people, and when people take books, they hear ideas. And when they hear the idea of Krishna conscious, they can become devotees. So if you're feeling a lacking in your life, if you're feeling that you're lacking service, if you're feeling you're lacking engagement, if you're feeling a desire to preach but you don't know how to begin, you can simply buy a case of Srila Prabhupada's transcendental books and go out anywhere in the world and tell people about Krishna. Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. And in this way, you're connected with the flow of service directly coming from Lord Nityananda. And when you're connected with Lord Nityananda through service, He empowers you to act on His behalf, to give people the opportunity to practice Krishna consciousness. So this is the most satisfactory type of work that that anyone can engage in. There's different levels of charitable activities that one can accept. There's Daya Sambandhani Daya, by which one gives charity to the body. But this charity to the body is a temporary engagement, because the body, once you feed the body, it can become hungry again. If you give clothes, that jacket can get worn down and one will need a new jacket. So it doesn't give everlasting benefit, this particular type of charity. And then there's Manasambandhani Deha. Manasambandhani Daya. Manasambandhani Daya means one is engaging in charitable activities, but those charitable activities are only being done in relationship to the mind. So one constructs schools, one tries to educate people, one tries to teach people soft skills by which they can excel in life.
But this also won't give full satisfaction to the heart, because even if you teach people something in a university, in a school, the things which you're teaching today, which could seem very, very good, could tomorrow end up being bad. So for instance, previously in America, they used to teach people that women who were pregnant, if they were feeling sickness from their pregnancy, they could smoke cigarettes in order to get rid of that sickness. Now it's clearly understood that cigarettes are not good for anyone to take, especially pregnant women. So the ideas which are good and the ideas which are bad are constantly changing in this world. So even if you work very hard to educate people through creating institutions by which their minds can become satisfied and be productive members of society, that won't be fully satisfied, because what is good and bad in this world is constantly changing. But Srila Bhaktivinoda Thakur explains that the greatest type of compassion that one can show to humanity is this Atma Sambandhani Daya, by which one gives direct knowledge of who one is in relationship to Krishna. So book distribution is the highest humanitarian activity. And anyone who engages in this service will feel directly connected to Chaitanya Mahaprabhu and fully satisfied in the heart. So I was told to speak until 12, so it's a little bit over that, so we can have some questions or discussions if there's any questions. Roji, you told that to start with, we can start with this book distribution, get a case of Prabhupada books and start with that. But we are stuck in that starting phase only. We don't have a case in our house, first of all. And second, we don't feel like... Wait. Someone doesn't have a case of Srila Prabhupada's books in their house. That's one thing, but the second... No. First things first. Who doesn't have a case of Srila Prabhupada's books in their home? Full set of Srila Prabhupada's books. मैंने चैतन्य चरितामृत, भागवतम, Bhagavad Gita, small books. Okay, so whoever doesn't have a set of Srila Prabhupada's books in their home means Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, and Bhagavad Gita, and Nectar of Devotion. Whoever doesn't have these 4 books in their home, you come speak to me after class, and I will personally sell you a set of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Haribol. This is in prime necessity. Anyone who's connected with the Krishna consciousness movement, who's chanting the holy names of Krishna, must have a set of Srila Prabhupada's books in their home. It's not optional. You have to have a set of Srila Prabhupada's, complete set of Srila Prabhupada's books. Yeah, okay. So now to go ahead and to give it to someone, it takes a little courage, because we are fearful that somebody may ask a question and I may not answer that. So if I give a book also, if he cross questions me, why you are distributing books, what is there in this book, then I am not ready for answering that. And that's why I said before, one needs to make a scrutinizing study of Srila Prabhupada's books. If you're not convinced of the philosophy of Krishna consciousness, you won't be able to convince others. And simultaneously, if you're not convinced of the process of Krishna consciousness, when it's time to leave the body, you won't be able to convince your mind to remember Krishna. So it's extremely important for ourselves, for our own benefit, and for the benefit of others, that we make a systematic study of Srila Prabhupada's books. This is also not optional. Just like one makes a vow to chant 16 rounds at the time of initiation, one should simultaneously have a vow to read Srila Prabhupada's books every day for a certain amount of time according to their capacity. And it's not that you don't have time for reading. My Guru Maharaj says it's not a matter of time, it's a matter of taste. It's not that you don't have time, it's you don't have taste. So you get a taste for studying Srila Prabhupada's books by doing it regularly. And the longer period of time that you can read, the more of a taste you'll get. It's just like at the beginning of chanting your daily 16 rounds. The beginning of the 16 rounds, you don't feel so enthusiastic, but as time goes on, you begin to get a taste. So in the same way, when we make an effort to study Srila Prabhupada's books, that taste will come.
Thank you, Prabhuji, for helping us and guiding us how we need the books at first, and then we need to study them scrutinizingly so that we can speak out when we give the books. Correct. Thank you. Anybody has any other comment or question? Okay. So we are very grateful that His Grace Devabrat Prabhu gave us his time. He came to Bhubaneswar for a trip, and very nicely he is guiding and inspiring everybody for this book distribution. Already the marathon is on, and let us take the inspiration from him and get directly the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand Prabhu. His Grace Devabrat Prabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Okay, so whoever doesn't have a set, please come speak with me. Hare Krishna. Done? Last? संसार भितर भ्रमण करुछि यार कारण कौन कौन कारण हो पारे किए कहे हाँ कहतु